Hello. Hi everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. So I can see several of you guys are asking doubts in the chat session. See, in today's class, we are not like having any assignment, I guess, to discuss. Is there any new assignment that is good? I guess not. Like we have covered every assignment so far, right? There is just one problem remaining. That was the largest number that we haven't done yet, right? So we will be covering that today. Right? Apart from that, let's like first discuss key what are the issues that you guys are facing. Like several of you guys are already like posting your questions in the chat. So yeah, okay. So Prashant is saying, sir, how to practice with dry code. Prashant, can you just unmute yourself once and let me know what is the issue you are facing? Yes, sir. Hi Prashant. Sir, thank you for connecting with me. Sir, I'm still troubling with the dry code and I am practicing with this dry code. And since Mhm. sometimes situations are very difficult for with me, I am not able to understand the dry code and I am not able to solve some little bit of coding problems. Okay, so with dry code, you mean dry runs, right? That we Yes, like sir. do in the class. Yes, sir. Okay, all right, good. So see, for dry runs, what you actually need to do is you just need to first write the algorithm and then just try and just trace step by step using every, let's say if it's a normal question, just please create an array like usually how we do it in the class, right? Say it's a loop question. So just create a data structure that you are like performing a loop on, right? Please keep a track of, okay, so what are the values that we are currently working upon? Let's say I is going from 0 to n, right? So at this stage, what the value of I is, what is the like actual implementation of the code is going to be, right? According to that, please check how are the variables getting manipulated, or what are the data is being stored, right? That was for loops. Now for recursion, like you can say ki, I guess for you guys, there will be only a single call recursion, right? So far, you won't be having multiple call recursions, right? So in recursions, you can see in the last class, I basically did three dry runs, right? So there was one pattern similarly for every recursion code or basically call. I had a separate like box that represented, okay, so it's a recursion call, right? So you can try a similar method, Yes, sir. right? For dry runs, it's not like any rigid pattern. Dry run is for basically understanding how your code is working, right? So it's you who has to like figure out the best way for you doing a dry run. I can suggest some ways, like as I said, just dry run is basically seeing how the values are being manipulated, right? That's pretty much it from the dry run. Okay. Yes, sir. Yeah, apart from this, it's you who have to figure out कि अच्छा कौन सा तरीका मेरे लिए बेस्ट आ रहा है, मेरे को कैसे समझ आ रहा है. तो इसमें कुछ सही नहीं होता, उसमें कुछ गलत नहीं होता, बस आपको समझ आना चाहिए ट्राई रन कैसे हो. ओके. Okay, sir. Thank you, sir. या सो that was the question of Prashant. Jyoti, you are sharing a link of the problem. Yeah, ये link ना last में करेंगे. Like first we will be like discussing the largest number problem and then like we can like apart from that, if you have like any theoretical question that you want an answer on, you can like let me know. Like we can have a discussion of for 5-10 minutes, and then we can then we can start with the problems. Okay, Mehran, today's agenda is key. See, today I want to like tackle your questions as much as possible, right? Apart from that, I will be like covering first the question of sorting, right? Because sorting is a very important topic for you guys in the let's say examination. So sorting will be covered. We had like one problem remaining in the arrays that I said, okay, when you guys are done with the sorting part, we will be doing that. That is the largest number. Okay, so we will be like doing that today. Apart from that, if you guys are like, we can see several like one or two more sorting problems. Okay. So negative number mode example, for example, minus 15 mod 13, minus 15 mod 13, I guess. Minus 15 mod 3.
is 0. Everything is divisible by 0. नेगेटिव में n प्लस करके उसका मॉड ले लीजिए 14 comes out to be 1. See, in the negative numbers, I guess it's exactly the same, right? But rather than like I guess we have to like figure out the case actually. Okay, -1 mod 3 is 2. नेगेटिव में कितना कम आएगा वो okay I guess see Aman, like Zoom link I have shared in the WhatsApp group, right? You can like have it if you want. I can share it. Okay, so yeah, Jyoti, we will be having a look at the negative mods at this first continue with the session. Okay, apart from this, is there any theoretical doubt that you guys have? Any doubt, like any problem or any concept? Or let's start with the today's class. Sir, Yeah. sir, when we sort an array in a Uh-huh. function, in Uh-huh. that function, how can we know if that array is sorted or not? How can we find? Okay, so if you sort an array, yeah, it will be sorted, right? If you want to like check it is sorted or not, you can like Yeah. basically traverse through that array and check for the like consecutive values. Are they following the particular order of your sorting, right? Let's say if it is an like increasing order sorting, right? From let's say from 0, 1, 2, 3, 4, like that, increasing. So every element or every pair of elements should follow this rule ki array I should be greater than or equal to array I minus 1, right? So you can just have a for loop to basically check ki, okay, so if the function is like actually sorting it out. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay, guys. So let's start with today's problem, right? Let's Hello, start with sir. today. Yeah. I'm sorry. Sir, I have a question, sir. Sir, Uh-huh. in the recursion part last day, sir, Uh-huh. I was not present in the live class and I have watched the recorded session. Sir, my question is, for example, no X recursion problem. If Okay. we start the indexing from 0, then we have to make the base condition as last point. Okay. I is less than n. Yes, exactly. Or if we start from the back side, then we have to make the base condition as first point. If we start from back, yeah, we will have to like see the end point is going to be the alternate of the position that you are starting from. Got it? कि अगर आगे से शुरू कर रहे हो तो लास्ट में जाके आपका एंड आएगा, राइट? सो दैट इन दैट केस इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 index, so the end will be at an end index, right? So you have to traverse the entire array. So it's just depending on from which point you are starting. Got it? Yes, sir, thank you. Yes, yes, sir. Thank you. Okay, so let's then just start with the today's problem, right? See, Jyoti, for finding the maximum element from an array using function in one line, you can use a single you can write a function and like simple I guess a for loop to basically figure out the largest number, right? You can like create a new function there, you can do it, right? Or that is a simple one line solution. That's all. So, Yeah, Kunal. so एक लॉजिक के हिसाब से चीज बोली है, जैसे कोई एरे है जिसकी लेंथ सर n है, तो जिसकी लेंथ n है, मतलब कुछ भी 10 11 नंबर है, हाँ, तो उस एरे में से अपन को पता नहीं है मतलब कौन सी वैल्यू एलिमेंट्स अपन को चाहिए, तो अपन एलिमेंट्स निकाल के एरे डिफाइन कर सकते हैं सर लेंथ उसकी। समझा नहीं मैं आपकी बात मतलब आपको। जैसे सर एरे है 10 जैसे 10 नंबर का एरे है,
उसमें से जैसे अपन को कोई ऐसा लॉजिक लगा जिसमें से जो एलिमेंट्स अपन को चाहिए वो आ रहे हैं, हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि जो एलिमेंट्स अपन को चाह रहे हैं, अपन को लेंथ नहीं पता, लेकिन अपन उस एरे को क्रिएट करके उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। लेंथ नहीं पता, एरे को क्रिएट करके उसमें वैल्यू डाल सकते हो। हाँ। तो उसके लिए यार नॉर्मल एरे नहीं होगी, फिर उसके लिए ना एरे वो लिस्ट एरे लिस्ट हो जाती है, राइट? तो उसका मतलब कोई लॉजिक जावा में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, राइट? एरे लिस्ट करके होता है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें लाइक अगर आप वो एक ना डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है? मतलब अभी अभी के आई लिए गेस सीखना इतना जरूरी नहीं है। नहीं, आप सीखोगे मॉड्यूल 2 में हाँ सीखोगे। अभी नहीं है ना, नहीं, अभी आज सच इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब भाई। क्वेश्चन तो समझ गए ना सर आपने क्या बोल रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया कि आपको साइज नहीं पता, पर आपको n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको डालने हैं, राइट? तो बस यही हाँ, होता है कि आप एरे लिस्ट बना रहे हो, एंड एरे लिस्ट में आप सीधा ऐड करते जाते हो, राइट? तो ऑटोमेटिक वो लेंथ लास्ट में आ जाती है ना। हाँ, हाँ यस। तो वो एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप अपेंड कर सकते हो। तो वो क्या करता है कि आप जब भी अपेंड कर रहे हो, और जैसे ही मतलब इनिशियली उसने एक साइज की बनाई, राइट? अगर आपने फिर अकेला डालो चेक साइज है ही नहीं, तो फिर वो आधे साइज से ना उसको और एक्सटेंड कर सकता है, राइट? तो जो करंट लेंथ है उसका हाफ से और एक्सटेंड कर, ठीक है? तो ये सारा काम डायनेमिकली कंपाइलर हैंडल करता है ऑलरेडी इन फंक्शन। Shashwat, see, yes, the problems in the, I guess your examination will be in function form. How you can see, yeah, how you have in lead code, right? So in lead code, you have already like given parameters, right? If you all like, if you guys are good with functions so far, right? It will be basically key input and output will be taken care by the compiler only. You guys just have to figure out the logic for the, yeah. सर वही ना, मतलब कि फंक्शंस का क्वेश्चन, मतलब वो फंक्शन का क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जैसे नॉर्मली क्वेश्चन। Sorry. वो जो क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए फंक्शंस कोई क्वेश्चन आएगा, फिर उसको मेन में हाँ। जाके पास कहाँ कर पाएंगे, तो फंक्शन ही लिखना पड़ेगा उसमें सर। उसमें आपको मेन पार्ट नहीं लिखना पड़ेगा, लाइक उसमें आपको कोई इनपुट आउटपुट नहीं करानी होगी, ठीक है? उसमें आपको सिर्फ वो कराना होगा कि क्या कहते हैं, उस कोड, उस फंक्शन का लॉजिक लिख के उसको कंप्लीट हाँ कराना होगा, ठीक है? उसमें आपको इनपुट आउटपुट नहीं करानी होगी, आपको उसमें रिटर्न्स में काम करना हाँ सर। है। ओके, ऑलराइट। So yeah, let's start with today's class, right? Largest number problem. Okay, let me just share my screen. हेलो सर। Yeah, hi. सर जैसे टेस्ट है वो लीड कोड पैटर्न पे आएगा, हाँ, तो सर उसमें जैसे लीड कोड पैटर्न में होता है टीएलई मार देता है, तो ऐसे ही यहाँ भी टेस्ट में होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर टेस्ट केसेस नहीं रन हो पाएंगे? हाँ, हो सकता है, लाइक आई एम नॉट श्योर, लाइक एग्जैक्टली श्योर अबाउट इट, बट हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, राइट? बट उसमें आप इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें इतनी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की आई गेस नीड नहीं, ठीक है? तो वो ओके आप सर। अपनी साइड से बेस्ट देना, और हो सके तो आप ऑप्टिमाइजेशन देख सकते, राइट? आई गेस मेन क्लास में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताया होगा। तो हाँ सर बताया था। और सर जैसे टेस्ट केसेस होंगे जो फेल हो जाएंगे तो हम उनको देख सकते हैं टेस्ट में? हाँ, मान लो ये सब ना प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, आप कौन सा प्लेटफॉर्म वो यूज करते हैं ना आपका टेस्ट के लिए। कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको, देखो कोई भी प्लेटफॉर्म आपको सारे टेस्ट केस नहीं बताएगा, जैसे लीड कोड आपको बता देता है ना कि यहाँ पे फंस रहे हो, लीड कोड इज फॉर प्रैक्टिस, व्हेन लाइक यू आर गिवन एग्जाम, गिविंग एन एग्जाम, इट विल जस्ट टेल यू कि ओके कि योर टेस्ट केसेस तो तैयार होगा शायद सर। क्या सर टेस्ट आई मीट कुछ ऐप वेबसाइट है उस पे होगा। अच्छा, I लाइक सी think, आई एम नॉट लाइक श्योर अबाउट, मैंने कभी ना यूज नहीं करा, तो मैं बता नहीं ये सकता। मैं आपको सबमिट जनरल पैटर्न बता दूं कि आपको जब टेस्ट देते हो ना, तो आपको बस ये पता चल जाएगा कि ओके सो several टेस्ट केसेस आर फेलिंग, बट यू वोंट बी लाइक गेटिंग एग्जैक्ट द टेस्ट केस ऑन व्हिच इट इज फेलिंग, लाइक यू हैव टू लाइक फिगर इट आउट ऑन योर। अगर हो सकता है कि वो आउटपुट दिखाती है एक्सपेक्टेड आउटपुट इज दिस एंड योर कोड इज गिविंग दिस आउटपुट, तो वो हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि एग्जैक्ट आउटपुट दिखा देगा वो, लाइक एग्जैक्ट इनपुट दिखा। एक दो इनपुट्स होते हैं जो डमी इनपुट्स होते हैं जो आपको लाइक फिगर आउट करने में हेल्प करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स लाइक बेसिकली कि यू हैव टू फिगर इट आउट, राइट? तो वही होता है। इस सर जो टेस्ट केसेस शो कराएंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये प्लेटफॉर्म जो जिस जैसी वेबसाइट पे जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। हाँ,
यस कि मतलब कोई आप कभी भी टेस्ट दोगे ना किसी भी चीज का, तो वहां पे आपको सारे टेस्ट केस नहीं दिखाई देंगे, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये तो मान के मत चलो कि आपको टेस्ट केस जो फेल होगा वो दिखा देंगे, आप उसी हिसाब हाँ से सर। तैयारी करो कि आपको नहीं दिखाएंगे, तो आपको फिगर आउट करना होगा। ओके सर। Excuse me, हाँ sir. यस Sir, I have sent you a code in chat section. Sir, this code is working fine on my portal, but on lead code, some of the test cases are not passing. So whether it's due to time complexity or something else. यार अमन, आपने ना सिर्फ कोड भेजा, आप इसकी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो बताओ, प्रॉब्लम कर क्या रहा है ये कोड। ये तो चलो कोई बात नहीं, लाइक Pangram इसको एनाग्राम का है, Yeah, sir. कोई बात Portal नहीं, इसको ना सारे test cases इसको pass इसको लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जब Okay, मतलब sir, क्लास एंड हो जाएगी, ताकि बाकियों का टाइम Okay. वेस्ट ना हो। Okay. ठीक है, मैं बता दूंगा। ओके सो या चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। राइट आई गेस I hope the screen is visible, right? Largest number. Yes, we will be doing the largest. Okay. I hope the screen is visible. Largest number किस में है? I guess arrays में है. Okay. Largest number. Yeah. So this was the problem that was left. Okay. So how many of you guys like tried this problem and were able to actually solve it? How many of you guys figured it out? Was there anyone who was like able to figure it out? Okay. So I guess no. No. So see, in this problem, what is actually it is saying ki we are given an integer array, right? We are given an integer array. Now we have to rearrange the elements in the array such that the number that we can form after like clubbing all the numbers, right? That is the largest possible. Okay. See, as per the given example, we have an array of 3, 30, 34, 5, and 9. The largest number that can be formed from it is 9, 5, 3, 4, 3, 3, 0. Got it? So what is happening actually is I will be like needing to show it to you in the notepad also. कि कैसे working होगी. But for problem description, let's understand it from here only, right? कि we are given the integer numbers. Now we have to order them in such a way, right? We have to like swap the values or rearrange them in such a way that the number that will form after clubbing all the elements, right? So we will be just removing this comma and like creating an answer. So this number is greatest. Okay, that is what we need to do, right? Okay, so I hope the problem description is clear. Any doubts in the problem description? Because I will be like needing a notepad to explain what will happen. Yeah. All right. Just give me a second. So largest number problem, right? Okay. Yeah, sure. I will be like doing that. See, we are given an array, right? Let's say the example is 3, 30, 34, 5, and 9. Right. So we are given some numbers in the array. Let's also mark it. So it's at 0 index 1, 2, 3, and 4. Right. Now we have to figure out a rearrangement of this array such that the answer that we create, right? What will be the answer? The clubbing of these numbers. So the answer will be the greatest element that can be formed. So 9, 5, 3, 4, 3, 3, and 0. Right. So you can see 9 is an independent element, right? 5 is an independent element. 3, 4 is a pair. 3 is an independent, and 30 is a pair. Right. So you कोई can भी see. नंबर एक ही बार काउंट होगा. Yes, exactly. कोई भी number एक ही बार count. Right.
So we have to like rearrange it. So what will be the rearrangement look, or what will rearrangement look like? It will look like something like this. So 9 followed by 5 followed by 34 followed by 3 followed by 30, right? So these are the new like arrangements that we have to figure out. Okay, this is some sort of an arrangement problem, right? So what are the initial thought you guys have, right? How can we figure out? Okay, so yeah, was anyone saying something? Sir, sort function. Yes, exactly. See, there is something we have to figure out. Okay, so we have, what is the like most desirable answer? 9 5 3 4 3 3. यस सर, लास्ट में 3 आएगा जब भी तो लार्जेस्ट होगा ये 303। लास्ट में 3 आएगा तब ग्रेटेस्ट होगा। एक बात बताओ, यस सर, इससे तो 303 largest बड़ा होगा। होता है या 330 बड़ा होता है? कौन सा बड़ा होता है? नहीं सर, सर वो तो इसमें तो 0 लग रही है और ये इंडिपेंडेंट है तो ये पीछे नहीं आएगा। See, it's not कि we have to like figure out कि independent values नहीं करनी है हमें प्रॉपर एक नंबर को एज अ स्ट्रिंग बनाना, राइट? इस पे हम आइटरेट करेंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे। तो आप कैसे कह रहे हो कि 303 बड़ा होता है या 330 बड़ा होता है? कैसे कि ये वाला बड़ा होगा? ये तो 330 ही बड़ा होगा, बट इंडिपेंडेंट जो वैल्यू है जैसे सिंगल वैल्यू वो अलग से या तो आगे रखी जाएगी या फिर पीछे, कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। आपको टोटल नंबर सबसे बड़ा बनाना। यस ओके सर। सर इसमें जो पेयर वाला उसकी डिजिट स्वैप हो सकती है, वो डिजिट एक साथ हो जाएंगे? नहीं, सी the only swapping that you can do is on the individual numbers, right? If the number is 3 and 30, you can like swap 30 and 3, right? आप 30 को आगे कर दो, 3 को पीछे कर दो, ऐसा कर सकते हो। You can't just do कि 0 and 3, ये नहीं कर सकते आप, right? इसको नहीं कर सकते। Okay, got it? So that's the problem description, right? You have to do a rearrangement of the elements in the array. Okay. Yes, Jyoti. Yeah. Why not 9543330? This is the largest number. 95433. Okay. So I can see कि 9 I have as an individual element, 5 I have as an individual. Do I have any sort of a 4 3 or a single 4? No, I have a 34. That's exactly what I said. I can't make 34 43, right? This is invalid. I can't change the number. I can just change the position of that number in the given array, right? You can see 9 9 hai, 5 is 5, 34 is 34, 3 is basically this 3 and 30 is this 3, right? I haven't changed any number like in itself, right? I'm just changing the position. Okay. सर जो स्ट्रिंग में नंबर को कन्वर्ट करके फर्स्ट कैरेक्टर के साथ कंपेयर करना, ऐसा? Yes, exactly. So it's some sort of a string comparison like question, right? How can we do this? Let's say ki, okay, first thing you guys have figured out ki we will be like needing some sort of a comparison. So I can say ki let's copy this. 3 30 34 5 and 9, right? Okay, so it's a comparison, right? First thing we figure out ki compare karna, right? Second thing I can like say कि sort भी करना है। sort कैसे? It's kind of sorting algorithm, right? कि we need to figure out कि okay, मैं 3 को, let's say कि we are talking about the arrangement of these two elements. So I have to figure out कि first what do I need to keep? Do I need to keep 30 and then 3, or I can keep 3 and 30? Which one is giving me the greatest element? So a smart way to do this is कि you can't like individually judge कि okay 30 को पहले रखते हैं, 3 को पहले रखते हैं. No, because you can see we are like clubbing these two elements together, right? So it's not individual elements comparison, it's a clubbing comparison. So a smart way to do is ki plus kar do, so we will be getting a 303 and a 330, right? So now just compare ki which one is giving me the greater element, right? Which order is giving me the greater element? Nice. समझ नहीं आया? Okay, is the problem description clear, right? Is the problem description clear? Yes sir. Okay, अब देखो, हमें ना नंबर बनाना है। नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप देखोगे कि मैं कौन सा नंबर सबसे पहले रखूं, कौन सा नंबर फिर बाद में रखूं, राइट? Guys, just let me complete this in like Hindi for 5 minutes and then I will be like completing it again. Okay, so for देखो क्या होगा कि आपको पता करना है कि मैं सबसे पहले 3 रखूं या 30 रखूं, राइट? कैसे पता करोगे कि 30 रखना है या 3 रखना है? कोई इंडिविजुअली आप इन दोनों को तो कंपेयर कर ही नहीं सकते ना,
आपको क्या करना है कि आपको फिर देखना है कि अच्छा अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करता हूँ कि नंबर बना रहे तो 3 और 30 रखूं या 30 और 3 रखूं, राइट? क्या कर सकते हो, इसको ऐड कर दो तुम लोग को, स्ट्रिंग कंपैरिजन तो कर सकते हो, स्ट्रिंग का अपेंड कर सकते हो, सॉरी ऐड कर सकते हो, कॉन्कैटनेट कुछ भी बोल दो। सो इसका क्या बनेगा, 330 बनेगा, इसका क्या बनेगा, 33 बनेगा, 303 बनेगा। सो नाउ वी कैन कंपेयर कि विच वन ऑफ देम इज ग्रेटर, राइट? अगर कोई स्वैपिंग की जरूरत है, राइट, बिना स्वैप के मेरे को ग्रेटर मिल रहा है तो मैं बिना स्वैप के रखूंगा, अगर स्वैप करके मेरे को ग्रेटर मिल रहा है तो मैं इनकी लाइक इंडिविजुअल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दूंगा, लाइक मैं ऐसे कर दूंगा 30 हो गया, 3 हो गया, 34 हो गया, राइट? मैंने इन दोनों को कंपेयर करता एंड सो ऑन। तो अगर स्वैप करके मेरे को ज्यादा बड़ा मिल रहा है तो स्वैप करूंगा, नहीं मिल रहा तो आई वोंट लाइक स्वैप। अब समझ आया? Right. So I just need to figure out, okay, so what is the starting point, right? The greedy way of you can say is ki let's compare with every element and figure out ki, which element is like which element should be put at the start that can like help me build the longest like greatest element. So what I can do is ki let's just figure out and try to like keep the greater values in the front, right? So let's say ki let's create two variables I and j, right? It's a two sorting concept similar to like kind of bubble sort, right? So it's a key I, and let's say key it's the j is I plus 1. Now I can compare what is string at I and j, right? So I can say key if ij, right? Basically ij means 3 plus 30, right? I'm just writing this. Is ij greater than ji? Right? Is ij greater than ji? Right? What does this mean? Ki ij kya hai? 330 is greater than 303. So don't swap, right? Is the swapping is swapping required? I can say no, no swapping is required. Then just simply increment j. Is the next element greater than this? Sir, element present in the array is in integer format or string format. This, yeah, see, this is the thing. See, they have like instructed us to take the inputs at integer, but we can like create a new data structure in which we are storing the elements in string, right? Or while comparing, we can convert the integers to strings, right? So it's in our hand how we can do it, right? It's just key taking inputs in this manner in this question doesn't matter. It's just how you build an algorithm, right? Okay. See, why string is required? Because if I do an integer addition, right, 3 plus 30, what will the integer addition give me? It will give me 33. But when I do a string addition, so 3 plus 30 will give me a 330, right? So see, I guess this one is the actual requirement for the code. Okay, apart from like direct. So string is a much better data structure that we can like work on. Okay, so this is the observation that we have. Now, as I was saying, if we first checked for j at 30, is it greater? We figured out that no, it's not greater. So we incremented the j, right? So let's mark it 1, let's mark it 2. The second check is, okay, is ij now greater than or equal to, right, ji? If that is the case, please don't like do any sort of swapping. If it's not, please do a swapping, right? So I can say ki swap karna hai ki nahi. Okay. Now, what is the ij? Ij makes it 334, right? And ji makes it 343. So is the swapping required? Is the swapping required? Yes, I can say because 343 is greater than, right? So I can say yes, swap kar do. So what will happen? Ki let's just change the color, right? So we can like see the swapping. So 3 will come at j's place and this will go, right? So 3 right, so 34 came front in the front and 3 got right. Now let's continue this process again, right? So let's check for the step number 3, right? Let me just write step number 3. Now ij, is it greater than or equal to ji? What is ij? Okay, so after swapping, just please increment it, right? Swapping karo na karo, increment karo, right? So at this time it's 3 4 5, right? And this time it's 5 3 4. Again, I can say swapping is required. So what will happen is ki 34 yahan aa gaya and 5 basically got it, right? So you can see some in this algorithm, the heavier element is coming to front, right? The heavier element in the combination is coming to front. Okay. Now the next iteration will be of let's say the iteration is 4. J will be now standing at 9. Right. Again, ij
and ji, right, greater than or equal to. So ij basically means 59 and ji means 95. So yeah, I can say again swapping is required. So 5 came at the last and 9 came at here. See, we are not concerned with what is happening in this part, right? Yellow wala part, we are not concerned. We are just concerned with the part that I has covered. So you can see कि I is starting to create a new greatest element, right? हमारा largest element 9 से ही शुरू होगा, तो we just created this, okay? Because this is the maximum combination that I can get. Okay, so this is one. Now what will happen? Ki same algorithm with I at the next element, right? Now let's just do these steps. Okay, so this time what is the I and j going to be? Right, what are the two numbers that we are going to compare? J yahan nahi aayega, j will be just I plus 1. Right, so yeah, I is at 30, right? 30 plus 3, is it greater than or equal to, right? This is greater or equal to, let's say 30 ji, right? 330. So I can say it is greater. So please make a swap. So 3 yahan se hata, 3 yahan aa gaya, right? And 30 will come, right? So you can see it's kind of bubble sort like algorithm, right? How in bubble sort we just push the heavier element towards the end, but in this algorithm we are like just pushing the heavier element to the front, right? Got it? So let's just complete the dry run. How j starts from 3, not 9. Okay, you can see ki, okay, dekho, if I'm like comparing two elements, I can like compare these two elements, right? So I can simply say ki I starts from 0 and in the nested for loop, j starts from I plus 1. Okay, so it will just make sure ki j is like a step ahead. Okay. All right, so this is the first operation. Let's complete the dry run. Okay, so we just made the swap. What will happen ki j will increment. Now, what is ij? I is 3, 3, 4. Ij is 3, 3, 4 and 3, 4 and 3. Which one is greater? Again, a swap is required, right? 43 is always greater than 34. So again, make a swap. So 3 came here and 34 got, right? And just do this swap again. Sorry, increment again. So j. Right. This time, what is the elements? 3, 4, 5, 5, 3, 4. Obviously, 534 is greater. So make a swap. What will happen? 34 come here and 5 goes here. Now you can see ki the two heaviest elements, right, that were like creating the greatest answer are at the top now. Okay. Again, right, we are not like concerned with what are the elements, because I have a faith ki in my algorithm I'm like combining and comparing them, right? So obviously whatever the combination I'm getting with the maximum, right, whatever combination is giving me the maximum value will just give me the correct answer. Okay, see, bubble sort sorts like heavier in the end. This algorithm is like putting heavier in the start. Exactly that. Okay, now next dry run. Okay, so let's keep this. Right, again ij is like 33, 3, 30. Again a swap, right? Swap is required. So 0, right? Now j increments. So this time it's 34, right? 34 is 334 or 343. Again a swap. So 4 goes from here to here, right? Again, I guess only 2 swaps were to check. So yeah, these move. I yahan j yahan. Now again 30 and 33, right? 303 and 333. So again a swap is required, right? So what happened is keep 0 got from this to this, right? Basically 3 and 30 got swapped. So is this the largest number possible? Let's check with the output. 9, 5, 34, 3 and 30. So we got the largest number, right? Now when the order of the array elements are sorted, 9, 5, 3, 4, 3 and 30, right? When this is sorted, I can just write a for loop and like create an answer string, right? Let's say we create a string answer, right? Just append this element one by one, right? Like using for loop, you can just do that. Now, any doubts you guys have in the approach algorithm, you can just let me know, right?
How are they comparing if they are converted to string? See, exactly. We did this question yesterday also, right? String dot compare. Right, string dot compare to what it does is it will just okay. So let's just do this also. Right, how does comparison this happen? Let's say the two numbers are 5 and 9, or let's just take a bigger number. So 132, and the next number is 342, right? Or let's say 134, right? Let's say these are the two numbers. Okay, now if I write this one is S1 and this one is S2, right? What will happen? I can write S1 dot compare, right? COMPARE compared to, right? Compared to, yes, we will be coding it. Compared to S2. Compared to S2. What will it mean? If let's say if S1 is greater than S2, it will return a positive value, right? Positive value. If S1 is equal to S2, it will return a 0. If S1 is less than S2, it will return a negative value. Okay. Now, how will the comparison actually happen? See what will happen is let's say this is I and J. So every character in these strings will be compared. So 1 and 1 are equal, right? So 1 and 1 will be equal. So yeah, just don't conclude anything now. Just move to the next element. 3 and 3 are equal. Again, move to the next element, right? I and J is equal, right? So again, this time 2 and 4. Which one is greater, right? Yes, it will return a positive and negative value. Okay, it won't return key true or false, right? See, because we have like 3 conditions, right? True false में सिर्फ 2 होती हैं. Positive negative 0 से हम 3 ones. Okay, now I is standing at 2 and J is standing at 4. So which one is greater? I can say 4 is greater. So what will happen? Which one will execute? It will return me a negative value, right? Negative value. Negative values tells me, okay, so S2 is greater than S1. Got it? See, the number we are comparing, what 4 is always greater than, right? So it's basically easy for me to say yeah, the number that you are comparing is greater, and that is S2, right? So it will return me a negative value. Got it? This is how like compare to function works in strings. Okay. What is this difference between string compare and string equals? So just let me the exact answer. Compare. See, the main difference is like in equals, we are just checking whether they are equal or not. Like if you, I guess you are like talking about this versus S1 equal to S2, right? So in this, you are like checking okay, are they both equal? So only this condition. But string compared to basically tells me additional values also. Are they equal? Which one is greater or which one is heavier or not? Okay, so just a simple difference, right? This one is just an inequality check. This one is an inbuilt function to basically help us figure out, okay, so which one is heavier? Are they equal, or either of them is heavy? Okay. Okay, any doubts now in this problem? Any doubts? Any concept you still guys want? Okay, so let's then just try and code it out. Okay. Let's try and code it out, right? Yeah, I would like highly appreciate if you guys like code along, like put some of your inputs. So the comparative function is used in all types of strings or particularly string like. I guess it's like for string mainly. I haven't like used it for any other. Okay, scanner like sc is equals to new scanner system dot in, right? We need an integer n is equals to new. Oh, sorry, sc dot next
int, type it in the next string. Now, either we can like create a integer array, or like we can like smartly take the values as itself in a string format, right? We can like do both. So let me just show you how we can like do the from integer to string conversion, right? So let's say it's an int arr, right? Int arr, that's an array, right? Is equals to new arr, new int, sorry, new int, okay. New int of size n, right? Now let's basically take in the inputs. Int I is equals to 0, I is less than n, I plus plus, right? C in the arr at I is equals to sc dot next int put. So far we have like created the data store. Now this is where we will like start to process, right? So we can like say key create a new string array, string arr, or string, let's say nums, right? It's a nums array, right? New string, right? New string of size n, right? Just write a for loop for int I is equals to 0, I is less than n, I plus plus, right? Nums at I is equals to integer integer dot to string arr at I. Okay, what this function is doing? It's just creating all the numbers that we took as an integer to the string format. Okay, now we can like start to create the start to write the approach. So I guess we need of two for loops for int I is equals to 0, I is less than n, I plus plus, right? The nested for loop for int j is equals to I plus 1, right? The next element that we are like comparing it with, right? J is less than n, j plus plus, right? So str in the string s1, string s1 is equals to nums at I, str in string s2 is equals to nums at j. Okay, now if s1 dot compare, right? We do it like function. Solve it. So solve it in okay, yeah, we can like do that also. Like just see the actual coding, and then like we will like convert it to the function, right? So that you can see the both ways and compare of what is the changes that you compared to s2. All right, compared to s2. Now, if this is giving me a negative value, right, that s2 is greater than s1, right? That means is less than 0, right? Only then just do a swap, right? So we need a string, let's say temporary string is equals to s1, right? Now, oh sorry, string s1, string t is equals to, let's say nums at I, right? Because we need to change the values inside the array, right? So t is equals to nums at I, nums at I is equals to, like, nums at I is equals to nums at j. So nums at j is equals to t. So yeah, we just swapped it, right? So it will like it's like exactly how you do a bubble sort, right? I hope that's pretty much it for the bubble sort. Now after this, we just need a string answer, right? Just to create the answer, that is an empty string. Now for int I is equals to 0, I is less than n, I plus plus, right? Just do a answer plus is equals to nums at, right? And after that, we just need to print. So as system dot out dot print ln, right, answer. But let's just recheck key whether we are like forgetting anything. Solution of scanner taking in inputs. Every input we took, string, new string,
we are like converting integer values to string, right? A first for loop, right? Outer for loop for I, we will say n. The integer for loop for I is j. Okay, j I plus 1 less than n j plus plus. String 1 nikala, string 2 nikala, like then we compared only if the like s2 is greater, right? That means ki in combination of, let's say ki 3 and 3 0, we are like getting the second option heavier, that is ji. Then we just need to do this. Okay. Oh, sorry. We are like just comparing the actual characters, right? So this is the mistake that I like did. So S1 plus S2 that we need to compare, right? Remember, we need to like concat it, right? So yeah. So this is how like even though I can make mistakes, right? So yeah, it's just trying to figure out what will happen. So S1 plus S2 dot compare S2 plus S1. If that is the thing, just swap the values, create the array. Let's try and run it if there is any error leaks. Okay, let's try and run it. Server plus 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 what I is equals to line number तो सर आप प्लस ज्यादा लगा दें line number 12. Okay, so we got a 9534330 exact. Okay, so 3 test cases failed. Three test cases failed. Yeah. So I अगर से n-1 होगा तो सर j plus 1 क्या वैल्यू आएगी? एरर नहीं होगा? हाँ, मतलब उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। देखो क्या होगा कि अगर आप इसको n-1 तक भी कैप कर देते हो, ठीक है, तो आपने n-1 तक इसको कैप करा, उससे क्या होगा कि जब नहीं भी करते हो तो अगर लेट्स से i is n-1, j क्या होगा n, तो इनर लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो अपना एग्जीक्यूशन करेगा नहीं, सीधा आउटर लूप भी एग्जीक्यूशन बाहर कर, वो होगा ही नहीं एग्जीक्यूट कभी, ठीक है। तो इनर लूप बेसिकली कंट्रोल कर लेगा। Okay, I guess. Okay, see, now what is happening is कि actually the logic is correct. Okay, the logic is correct. It's the only thing कि it's giving us a time bound error, right? So इसके लिए string builder का use होता है, right? So string builder is required. आपने string builder पढ़ा है? Yes, time complexity issue है। तो इसमें कोई नहीं, इसमें बस यही दिक्कत है कि हम ना बार बार यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहे हैं और ये स्ट्रिंग पे ना बहुत ज्यादा काम, राइट? एग्जैक्टली दैट इज द इशू। आपने अभी तक स्ट्रिंग बिल्डर पढ़ा ही नहीं है तो कोई लाइक सेंस नहीं बनाता उस पर काम करने का, राइट? एल्गोरिथम इज करेक्ट, यू गाइस सॉ। अगर आपको नहीं भी यकीन आ रहा तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग में एंड इसके बाद यहाँ पे ये +1 में समथिंग में चलती है, तो 1 सेकंड को पार करता है ना जब भी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्ट्रिंग्स जावा में होती है ना, वो हर बार न्यू क्रिएट होती है, उसके कारण बार बार जब स्ट्रिंग बन रही है ना तो वो इशू दे रहा है, और कोई इशू नहीं है। नाउ इफ यू गाइस, हेलो सर। हाँ सर लाइन नंबर 23 पे हम लेस देन 0 से कंपेयर मतलब करा रहे हैं, तो ये तो स्ट्रिंग है सर, 0 इंटीजर है। स्ट्रिंग 0 इंटीजर? अरे आपने कंपेयर टू फंक्शन नहीं समझा क्या? मैंने अभी समझा दिया था आपको कि अगर s1 कोई स्ट्रिंग है और s1 कोई स्ट्रिंग है, अगर उसका कंपैरिजन करो और वो s2 से छोटी आ जाए, इज लेस देन s2, राइट? यस सर। तो तब हमें एक नेगेटिव वैल्यू का आउटपुट मिलेगा, राइट? s1 मतलब s1 प्लस ऐसे देखो यार, आप सब कंफ्यूज हो अच्छा जाओगे। सर, इनका जो कंपेयर जो कराते हैं वो हाँ, तो मतलब इंटीजर मिलता है हमें? कंपेयर कराते हो तो अभी तो आपको समझाया था नोटपैड पे कैसे हो रहा है। हाँ यस राइट, सर, मैंने समझा था, मतलब उसमें इंटीजर मिलता है या फिर स्ट्रिंग? उसमें नेगेटिव इंटीजर वैल्यू मिलेगा ना। तो इंटीजर मिलेगा। यस सर। यस, इंटीजर और नेगेटिव मिलेगा। वैल्यू अगर 0 से, ठीक है सर, समझ गया, अंडरस्टैंड। ठीक है, okay ठीक है Jyoti, सर। see, if we like convert the strings back to integer, like we are like not solving the problem, we are just like making an overhead, right? हम solve नहीं कर रहे क्योंकि the actual operation is to be performed in string, right? You are like converting everything into string and then to like your answer, so that is the issue, right? It's not like solving anything. Okay,
So yeah, for now, I guess this code is like pretty much The the best solution. example output is in string format. Sorry. So in the question, example output is in string format or in integer format? See, it's an output, right? So it doesn't matter कि आप इसको string करा रहे हो या integer करा रहे हो. आप इसको integer में कर दो, like कोई दिक्कत थोड़ी है उससे. Right? आपको यहाँ पे output देना है ना, तो हमने Okay, string sir. बना ली, Okay. क्योंकि हम उसको append करा रहे हैं. आप इसको अगर वैसे numbers में करते हो, तो वो भी आप करा सकते हो. Like पूरी string तो बनाओगे, उसके बाद उसको integer में typecast कर दो. Right? Okay, so you are having an issue with line number 18. Line number 18 क्या है? Sorry. Line number 17. जो can you just like tell which line? Line number 18 is a bracket now. I'm sure. 17, okay. So line number 17 is like, see, basically we took all the inputs in the format of an integer, right? Then we like we are converting it to string. So that from line number 15 to line number 18, we are just converting it from integer to string. Okay, that's pretty much it. You can see in nums at I as the new date or as the new array in the string format that I declared. Now I am taking every element from array I. Pass int. Hello sir. Yeah. सर इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये भी तो होता है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ. हाँ भाई आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी. तो सर इन दोनों में कोई डिफरेंस क्या है? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. आप एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिखते हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है. Sir, here we convert integer into string, right? Yeah. Yes. Then string dot value use. Can we You are use not string dot value of? string dot value of, yeah, you can like use that also. Key string dot value of like is used to like basically we need to convert some integers into string, right? So any statement that is converting integers to string, that is a valid like replacement for the string that I have the line that I have written. Okay, so now this is the one way. Let's like have a look कि इसको function में कैसे कर सकते हैं, right? You guys were interested in doing that. So let's say कि let's keep the static, right, a return type of string, and let's call it a solve function. Right, what is the thing that are required? So I can say it's a string array, right? String string. Let's say let's call it nums only, right? And an integer n, right? Int n. That is the basically size. Now, what are the code that I need to do is I just need to like from this part to this part, right? Control, we can say x, control v, right? I just need to return the answer, and in this I just need to print solve whatever I get from the nums within size of it, right? So what I did is I just kept the logic separate of taking inputs, right, creating the new data structure, and the logic of the actual sorting are separate, right? Okay, so it's a nums array. Okay, let's try and run it as well. Yeah, exactly the same thing that we got. Okay, so do you guys want the code as well? I can like share it in the WhatsApp group or the chat. Okay, do you guys want it to be shared on the WhatsApp or as well? WhatsApp, okay. Just give me a second. Okay, so I have like shared it on the WhatsApp as well, like group. Okay. एक बार सब एरे डिविजिबल बाय k बता दीजिए, किसी एरे का क्वेश्चन है. सब एरे डिविजिबल बाय k करा नहीं था हमने. Sir. Yeah. Sir, from 13, can you repeat one more time what's happening? Okay, in 13, now what is happening? We are like just okay. So you
understood the part, right, where we are like concatenating the string 1 with string 2. Why Yes. exactly? Yes, sir. From 13 can we do that? Okay, so from 13 we can say key we are just comparing these strings, right? We are concatenating s1 plus s2 and s2 plus s1. Like we are figuring out in which order we are getting the greater element, right? After figuring it out, we are just like swapping the string, right? If a swap is required, it's a just simple swap done on the array elements, right? We were comparing the concatenations, but we are doing the swappings to just achieve that orientation in the given array or the array, right? If a swap is required, then we are just doing the swap. And after that, from line number 20 to 23, we are just like iterating over the new nums array that we just created, and we are getting the answer. So why Okay. use 0 in 13? See, why use 0? Because we are like checking for the negative output, right? As I said in the let's say just let me share once. Sure. Yes, as I said, key if S1 is less than S2, right? What do I mean by S1 and S2 is key if the string that is key. Okay, so let's say key rather than S1 and S2, let's see it key 3 and 30, right? So A and B, right? So now if A plus B is less than B plus A, right? BA, it will give me a negative value, right? Negative value. Okay, that is what is meant from that line. Okay. Got it? Okay. Yeah, 3 test cases are failing because of the time complexity. It's not the error with the logic. Okay. Okay, so I hope that answers all your doubts. Right now, there is another function, another way of solving it using the comparators. Right? Are you guys familiar with the concept of comparators? No. Okay. Yeah, I got it. Got it. See, what happens is key when we are like doing it using comparators, now the only change is the code that we actually wrote, right? The code that we actually wrote, this code for part is just boiled down to this thing, right? That is arrays arrays dot sort, right? Arrays dot sort, and in that sort we just pass in the comparator function, right? Arrays dot sort, which array we need to sort? We need to sort nums array, right? With the comparator, right? We will be writing some sort of a comparator. So it is like an advanced stuff. I just wanted to let you guys know that there is another solution that helps us to like compile this highlighted code to just one line using a comparator. Okay, but you guys haven't studied comparator as of now, so there is like you guys won't be able to understand it. So I'm like not going to discuss it, right? Okay, with time, when you guys are good with comparators, you can like surely try it. Okay, the logic remains the same. Sum of array divisible by k बता दी. Okay, sum of array divisible by k बता देते हैं, पर उससे पहले sorting पे एक और question करते हैं, right? So that like I can also get to know guys ki how you guys are confident with that. Okay, so are you guys up for another question in sorting? Simple question होगा. This time I would like you guys to basically participate in it. Okay. This one. Okay. अभी तक हमने सारा लेक्चर चलाया, सब कुछ करा. अभी तक ना वन वे कम्युनिकेशन, राइट? Now this time आपका टेस्ट बहुत पास है, तो I would like really want you guys to like check whether you guys are able to do it. Okay. So I'm just sharing merge to sorted linked list. So no, same वही बात मैंने कहा था ना कि लिंक लिस्ट अभी आपने करी नहीं, ये मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन. Okay. See, I'm sharing a link. Sorting का यूज नहीं हुआ संकेत, in which problem? Largest number. I never said ki like it's going to be exact sorting. I said it's something similar to bubble sort, right? Okay. यार peak element में करा चुका हूँ, I guess.
पीक एलिमेंट ना करा चुका हूँ, तो पीक एलिमेंट दोबारा करा के कोई फायदा नहीं. Okay, so guys, I have like shared a link to the problem, right? Please open this. This is the lead code problem. Okay, I really want you to you guys to like see how we can like use lead code, right? I will also be opening this link. Okay. 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 All right, guys, is the screen like visible lead code problem? सर लिंक ओपन नहीं हुआ सर. लिंक ओपन नहीं हो रहा. अब देखो मैंने तो सेम ही लाइक डाला है. Link is working. Yeah, exactly. मेरा खुल रहा है सर. Oh, great. So yeah, guys, I would like you to spend like 5 minutes with this problem, right? 5-10 minutes. Try and build an algorithm, right? Try and like see, okay, let's say this problem comes to your coding exam, right? How will you like attempt it, right? I'm giving you like 5 minutes to basically think on your own. After 5 minutes, I will be like having an interaction with you guys where you can like tell me what are your thoughts, how are you going to approach this problem, right? So let's do that like practice session key, how you like can clear your doubts, like how can we do this, so we can do that. Okay. So yeah, just spend 5-10 minutes, go with the problem description, have a look at the like inputs, outputs, constraints, whatever you want to do, right? It's your problem. After 5 minutes, we can have a discussion. Okay. Sounds good? Yes, sir. Okay. Yeah, please do that.
Okay, guys, are you able to like think of any solution? Anyone? क्वेश्चन नहीं समझ में. Okay. हेलो सर. Yeah. Hi. सर इसमें यही तो बोला गया है कि एरे में अगर हमारी जो वैल्यू है मतलब सॉर्टेड नहीं आ रही है, जैसे कि आई जो है आई प्लस प्लस से ग्रेटर देन आ रहा है, तो काउंट को प्लस प्लस करना है एंड देन स्वैप. स्वैप सर स्वैप नहीं करेंगे, स्वैप की कोई जरूरत नहीं. स्वैप की जरूरत ही नहीं. initialize count with 0 and check with the sorted सर array and then अगर स्वैप नहीं करेंगे तो लास्ट में आके प्रॉब्लम होगी सर. मैंने क्यों प्रॉब्लम होगी? सर जैसे कि 4 अगर 4 जैसे इसमें 4 आ रहा है, 4 यही रहेगा, 4 लेस देन 2 काउंट प्लस प्लस मतलब ग्रेटर देन 2. फिर सर 2 ग्रेटर देन 1 काउंट प्लस प्लस. ऐसे नहीं देखना ना, आप गलत देख रहे हो यार. आपको ऑर्डरिंग खराब नहीं देखनी, आपको देखना कि विच like candidate is not at its expected position, right? That you have to find out. आपको ऑर्डरिंग उल्टी नहीं देखनी, ठीक है? ओके सर. हाँ, तो यही था. Yes, Sir. who was it? Yeah. Yes, sir, Prabha. Yeah, Prabha. Sir, in this question, it said that the students should stand in a non-decreasing line. So basically, decreasing line would mean in a descending order. So Yes. non-decreasing line would be in ascending order. So then we would Yes. sort, make another array and then sort the array. Make Exactly. another array. Then we would sir export all the values of heights to the new array and then sort heights and then initialize count with 0 and then check check both the array and if elements do not match, then we will increment the count and then return count. Yes, exactly. Like we have to like sort the array and check for the mismatches, right? Exactly. Yeah. Okay. Sir, So ऐसे how भी many तो of हो you? सकता है. बोलो. सर पिछले वाले से या तो छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब प्रीवियस एलिमेंट से छोटा नहीं होना चाहिए और आगे वाले से बड़ा नहीं होना चाहिए. ऐसा हो सकता है, राइट? ऐसा मैं मना नहीं कर रहा, ऐसा हो सकता है, पर इस केस में क्या होगा ना, आप बहुत एक स्पेसिफिक केस को देखो. लेट्स से कि ये जो केस दोनों कंडीशन लग जाएंगे. और लेट्स से कि ये जो केस एक्कर हो रहा है ना, ये ऐसे कहीं पे हो रहा है जहाँ पे वो तीनों के तीनों एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, राइट? लेट्स से कि लास्ट में जाके कहीं ऐसा हो रहा है कि 1 4 and 3, राइट? आप बोलोगे कि 1 4 and 3, 4 के लिए मिसमैच आया, राइट? आपने उसको एक काउंट करा, पर हो सकता है ना 1 4 3 तो वहां पे एग्जीक्यूट ही नहीं होने चाहिए, वहां खड़े नहीं होने चाहिए, वहां पे तो कुछ लेट्स से कि 17 15 ऐसा कुछ होना एग्जीक्यूट चाहिए. तो ये आप गलती फंसोगे, राइट? जो प्रभा ने हमें एग्जीक्यूशन बताई वो करेक्ट एग्जीक्यूशन है, वो सिंपल एग्जीक्यूशन, राइट? Okay, now how many of you guys like faced an issue with the coding in this format, right? So far in Accio we are like used to write all the code, take the inputs, right? But how many of you are like able to solve it in this format, right? The lead code format. हेलो. Yeah. सर ये ओरिजिनल एरे को कॉपी करके कॉपी एरे को शॉर्ट किया जाए, फिर कंपैरिजन करे ओरिजिनल एरे और शॉर्टेड एरे में, यदि डिफरेंस है तो काउंट बढ़ा दिया जाए. हाँ, exactly. See, what we need to do is कि let's just say कि let's figure out the int n, right? int n, that is IGST heights dot size. Okay. Oh, sorry, length. Okay, heights dot length, and after that, let's say we create a new array, right? Okay. So let's create an integer array. Let's say int arr is a new array is equals to new new int, right, of size n, right? For int I is equals to 0, I is less than n, I plus plus, right? We need to put all the values from height to array. So arr at I is equals to heights at I, right? So we basically copied all the values. Now we just need to sort it. So arr ays arrays dot sort. Which array we need to sort? We need to sort arr, right? Array sort hogi. Now again for int I is equals to 0, I is less than n, I plus plus, right? अब सॉर्टिंग से क्या फायदा हुआ कि हमें ना वो मिल गया कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पे खड़ा होना चाहिए. तो हमने एक आंसर बनाया. Now if let's say कि arr at I is not equal to heights at I, right? Only then increment the answer.
answer plus plus, right? And at the end we can just return the answer. Got it? Right? So this is the yeah. इनिशियलाइजेशन में आप जब array I equal to height के इक्वल किए हैं वहाँ पे array I, हाँ, तो मतलब सर आपकी आवाज कट रही है, जस्ट रिपीट अगेन सर। वहाँ पे समझ नहीं आया सर, वहीं पे। अच्छा ये क्या करा मैंने, लाइन नंबर नीचे कौन सा लाइन नंबर, लाइन हाइट के इक्वल किया यहाँ पे। लाइन नंबर बता दो ना मेरे को वैसे। लाइन नंबर 6 की बात कर रहे हैं 4 सर 4। अच्छा लाइन नंबर 4, सो दिस वन राइट। 6 सर 6। अच्छा 6, तो इसमें कुछ नहीं करा ना मैंने, बस जो एलिमेंट्स थे एरे के, उस जो हाइट्स के एलिमेंट्स थे उनको मैंने एरे में कॉपी कर दिया, राइट। तो अगर लेट्स से कि मेरे हाइट में ये था 1 1 1 1 5 4 3, राइट, अगर ये हाइट में था, लेट्स कॉल इट h, तो मैंने यही सेम ARR में भी डाल दिया ना, कॉपी कर रहा हूँ मैं एक एक करके। आपने देखा, मतलब मैंने हाइट्स की आई लेंथ की हाइट्स में, मतलब n लेंथ की हाइट्स बनाई थी, सॉरी एरे बनाई थी, और हर एरे के अंदर मैंने हाइट्स का वो डाल दिया। उसके बाद एरे को सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने के बाद आंसर आ गया, एंड बस वही, राइट, उसको आगे प्रिंट करा दिया, रिटर्न करा दिया। ओके या सर, आई एम totally able to understand the logic as well as to, if I was working on Portal, I would easily solve it, but in function I am facing problems, sir. So what should I do? In which in this format I am facing problems to execute. Okay, देखो इसमें क्या होता है ना, when you like code on LeetCode, see, you remember the assignment of a functions assignment, right? In functions assignment, the main motto of that assignment was कि making you familiar with how to write custom function or the how to write code inside the function, right? क्या करते थे हम उसमें, inputs लेते थे main में and print कराते थे वो चीज जो हमारा ना function return करता, and the core logic of the execution for that question we wrote in the function. It's exactly same thing here, right? इसमें क्या होगा कि इसमें आपको इनपुट्स नहीं लेने, आउटपुट्स नहीं लेने। द ओनली थिंग इज कि यू कैन सी कि वी आर गिवन अ पब्लिक इंट फंक्शन डिक्लेयर्ड, राइट, कि हाइट चेकर एक फंक्शन है, एंड द वेरिएबल दैट इज पास्ड टू दिस फंक्शन इज इंट हाइट्स। ओके, नाउ यू हैव टू लाइक कंप्लीट द डेफिनेशन फॉर दिस फंक्शन ओनली। यू आर नॉट सपोज टू डू एनी सॉर्ट ऑफ एन इनपुट एंड आउटपुट, राइट। आपने देखो मैंने कोड में कुछ इनपुट आउटपुट नहीं करा, राइट। क्या काम होगा, अगर आपको कुछ चीज आउटपुट करानी है तो आपको मेन फंक्शन को रिटर्न करानी पड़ेगी, राइट। रिटर्न क्या कराना, आपको ऊपर देखो पब्लिक के आगे इंट लिखा, तो यू नो कि इट्स अ पब्लिक इंट, सो वी हैव टू लाइक रिटर्न समथिंग ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। I know some functions is being clear to me, but what happens that after seeing the just 2 lines I get confused. Although I know about the function that how it's work, but as I am not so familiar because I don't used to do much code in function format. So that's why I'm feeling a little bit. So yeah, see, the only solution to that I can say is practice, right? Just go to the gym section, like practice there, like keep if you're like moving to a LeetCode, or like see the exam will be in this pattern, right? I am like more confident that it will be in similar pattern to LeetCode, right? So if you're like not comfortable with like function programming, the only like way you can fix it is by doing a lot of practice. Hello sir. Yeah. सर, इसको हम विदाउट शॉर्टिंग यूज करें, जैसे इटरेट करके नहीं कर सकते i और i++ से, i+1 से, i and i+1 से, राइट? इटरेट करके सर। इटरेट करके कैसे करोगे? चलो देखो क्या कह रहा हूं मैं कि लेट्स से कि आप सब कुछ कर रहे हो, पर क्या होगा कि एक सेकंड, लेट्स से आप ये वाला एग्जांपल देखो, ठीक है, इसमें सॉर्टिंग यूज कर सकते हो, आई लाइक, पर उसमें दिक्कत क्या आएगी कि लेट्स से कि यहाँ पे देखो 4 नहीं है ना, इसका सॉर्ट करोगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 1, यहाँ पे आना चाहिए 2 2 1, यहाँ पे आना चाहिए 3 एंड देन आना चाहिए 4, राइट। सॉर्टिंग से क्या हो गया, आपको पता चल गया कि एक्चुअल ऑर्डर क्या है, राइट। तो इसमें आपको कुछ ना एज सच एल्गोरिथम की जरूरत नहीं। अब इसके अलावा अगर आप इसको सॉर्ट नहीं करते
राइट। ये तो एक इंडिविजुअल केस है कि चलो यहाँ पे आई गेस पास हो रहा होगा, क्योंकि एक मिस एक ये आ रहा है कि 4 जो है 1 से बड़ा हो रहा है, उसके बाद जो 2 है 1 से छोटा हो रहा है, तो एक काउंट यहाँ आ गया, ठीक है, उसके बाद एक काउंट यहाँ आ गया, तो आपको 2 काउंट मिसमैचेस के मिले, वो ये थे, राइट। ऑल्टरनेटली अगर आप इसको देखो तो 2 मिसमैच आपको, एक ये मिला 4 3 एंड 1, तो 3 मिसमैच मिले, राइट। तो आई गेस यही दिक्कत आएगी। और एक और चीज हो सकती है कि लेट्स से कि आप बोल रहे हो कि आप पैरामीटर्स चेक कर रहे हो, राइट, आप डेप्थ को चेक कर रहे हो, या आप दोनों साइड से कंपेयर कर रहे हो और करंट वाला एलिमेंट छोटा है। अब मान लो कि एरे का साइज बड़ा है, राइट, जैसे कि यहाँ पे 6 भी है, राइट, 6 भी है, 7 भी, 6 भी है, 4 भी है एंड 2 भी है, राइट। 2 की जगह हम इसको कर देते हैं कुछ ऐसा 5 है, राइट। तो अब देखो ये तीनों के तीनों एलिमेंट यहाँ तो होने ही नहीं चाहिए ना, तो ये तीनों के तीनों ही गलत है। आप इसको कैसे कंपेयर करोगे? अगर आप इसको फिगर आउट कर पा रहे हो तो वो फिर आप उसके आपके एल्गोरिथम सही है, राइट। बट इसका जो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है वो सॉर्टिंग से है। ओके ओके, ये आ गए। लाइन नंबर 3 और 4 में इनिशियलाइज किया, तो लीड 4 पे इनिशियलाइज किया जाता है ना, मतलब इनिशियलाइज करें मतलब? अरे मतलब कि डिक्लेयर किए हैं उसमें आप। हाँ, सर तो 3-4 में कॉपी करना जरूरी है, मींस डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते विदाउट कॉपिंग द एलिमेंट्स। देखो आप डायरेक्ट सॉर्ट कर दोगे तो फिर आप चेक किससे करोगे कि पहले बच्चे कैसे खड़े थे? आपको वो भी तो चेक करना है ना। सॉर्ट करके फायदा क्या हो रहा है कि आपको एक्चुअल ऑर्डर पता चल रहा है कि किसमें खड़ा होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड पता चल जा रहा है। हाँ। पर बिना, अगर उसको आप बच्चों को ही सॉर्ट कर दोगे तो आपने बच्चे ठीक कर दिए, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे गलत कैसे खड़े थे, राइट? सर तो इसमें 3 और 4 लाइन लिखना जरूरी है लीड 4 पे। 3 और 4 लाइन, 3 और 4 लाइन, हाँ, मतलब आप एरे तो बनाओगे ना, अपनी एक नई एरे बनाओगे, उसके लिए आपको लेंथ चाहिए, लेंथ आप निकाल लो, क्योंकि लेंथ आप ऊपर देखो ना, हाइट के साथ आपको सिर्फ फंक्शन में हाइट्स दी, उसकी लेंथ तो दी नहीं। हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट थी, हमें पता तो करना था कि जो हम नई एरे बना रहे हैं वो किस साइज की बनानी है, हमें हाइट्स की लेंथ की बनानी, तो हाइट्स के लेंथ मैंने एन में निकाल लिया, राइट। फंक्शन में यही होता है कि आपको जो डेटा दिया है उसके अलावा अगर आपको कोई डेटा चाहिए तो आपको एक्सट्रैक्ट आउट करना पड़ेगा, राइट। आप इनपुट नहीं ले सकते यहाँ पे कि सिस्टम डॉट सी, नहीं, वैसे नहीं होगा, एरर आ जाएगा। सर लाइन नंबर 4 में सर जो स्क्वायर ब्रैकेट में n है, वहां पे सर हाइट डॉट एंड नाम लिख सकते हैं? सॉरी, लाइन नंबर 4, हाँ, in the square bracket written n, can we write the height dot line? हाँ, लिख दो ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, बेसिकली दे बोथ मीन द सेम थिंग, राइट? Right. I just extracted out n because you can see I am like using n in several places, right? On the line number 9 also I'm using n. So it just makes sense ki we like extract out n, right? Okay. Yeah. Hello, sir. Can we do this without creating the temporary array? See, I guess we can do it. I'm not like really sure because I like see, I wanted you guys to like get a hold on sorting, right? I'm not like really sure if we will be able to, because we have to like figure out whether the students are in the sorted order or not. After that, we have to like check what was the actual order that they have to figure out. They have to be standing in, right? Apart from this, let's say you guys are talking about the peaks and depths, right? Again, I explained the same thing ki we can like have a situation where depth and like is in a place where they shouldn't exist at all, right? उसमें आप depth और वो सब देखोगे पर उससे कोई फायदा होगा ही नहीं ना। हेलो सर। या ऑल्टरनेटली आप इसमें फिर ऑल्टरनेटली अगर आपको इसका बिना सॉर्टिंग ही करना है तो आप फ्रीक्वेंसी एरे बना, राइट। फ्रीक्वेंसी एरे में आप सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी डाल लो और उसके बाद आप चेक करो कि यहाँ तक कौन सा एलिमेंट आ जाना चाहिए था, यहाँ तक कौन सा एलिमेंट आ जाना चाहिए था, इतनी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट हो गई है कि नहीं, राइट? यू कैन डू दैट। हेलो सर। सर आज और कोई क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं होंगे ना? I guess no, we are like almost out of time, so yeah, it was just a practice question so that you can get a taste कि कैसे होता है, ताकि आप doubts clear कर पाओ, right? Apart from this, I guess we don't have any problem to discuss. Right, class is pretty much over from my side. If you have anything to ask or want to have some conversation, you can stay back, or else you are free to leave. Yes, Kunal. सर एक बार सब एरे डिविजन बाय Sure.
So what is the Yeah. difference between the sorting part and the arrays dot sort? Any difference? Arrays dot sort is an inbuilt function, right? Arrays dot sort basically uses the most optimal time complexity or the algorithm that is possible for sorting. What is the most optimal algorithm? It's basically quick sort in the terms of let's say arrays, right? So it's an inbuilt function where you don't have to like worry about the time complexity, right? When we write bubble sort, it works in the n square algorithm. So it's basically inbuilt function you that is taken care for you, right? You can use it. That's the only thing, right? Apart from this, let's say if you are wanting to do something extra in sorting, you can like use a custom sorting function. Apart from this, for sorting, it's just enough. Yeah. So when there is no time complexity and also we can basically use array dot sort. Yes, array dot sort is like designed in such a way that it's like there for you. It's therefore to give you the best time complexity possible out there, right? इसमें आपको ये सब नहीं सोचना कि n square हो रहा नहीं हो रहा है, ये लिखा ही ऐसा है कि ये बेस्ट है, इससे ज्यादा बेस्ट नहीं कर सकते, राइट? इट्स लाइक इनबिल्ट, दैट्स व्हाई द रीजन इज कि इनबिल्ट, राइट? तो इसमें कौन सी एल्गोरिथम होती है? इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, राइट? यहाँ क्विक सॉर्ट ही होती है, ठीक है? n log n होता है ये सर. ओके सर. ओके सर. या संकेत सर, डुप्लीकेट एरे बनाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है सर, या फिर पूरी प्रोसेस ये जो आपने लाइन 4 से 7 तक की है उतनी करना ही पड़ेगा? लाइक डुप्लीकेट एरे बनाने के लिए आपको एलिमेंट्स तो डालनी पड़ेंगे ना, तो आपको एक नया एरे बनाना ही फंक्शन पड़ेगा. नहीं है कोई? आई गेस नहीं यार, मैं इतना फंक्शन नहीं किया भाई. 2 ही तो लाइन है, 2 लाइन लिखने में क्या दिक्कत है? ओके ओके. हर चीज का शॉर्टकट ढूंढोगे तो एटलीस्ट आपको डेप्थ तो पता होना चाहिए ना कि शॉर्टकट काम कैसे कर रहा है, राइट? आप प्रोग्रामर बन रहे हो, आपको हर चीज की वर्किंग अंदर से पता होनी चाहिए, कैसे वो चीज काम कर रही है, किस तरीके से डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, राइट? फंक्शंस पे आप जाओगे तो वही हो गया, arrays dot sort, एक लाइन बता दी सॉर्टिंग होती है. अब आप पूछोगे ना कि सॉर्टिंग कैसे हो रही है, तो वो सॉर्टिंग आपको पढ़ना जरूरी है, राइट? तो फंक्शंस तो आप एक्सप्लोर करते रहो. कुछ हेलो या विक्रम सर, वो फंक्शन का जो आर्गुमेंट है सर, उसमें दोनों एरे को ले सकते हैं? कौन से दोनों एरे को? सर जैसे एक हाइट एरे बनाया है, एक ARR है जो एरे है, दोनों हम फंक्शन के आर्गुमेंट ले सकते हैं, दोनों एरे? अब ये देखो ना, जब आपको वो मिलेगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, इसमें तो आप कुछ चेंज कर ही नहीं सकते ना, आप फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते. सर मतलब अलग से बना सकते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अलग फंक्शन बना लो, इसके अंदर अलग फंक्शन बना लो, पर आपको जो डेटा है वो सिर्फ इतना ही मिलेगा, इसी डेटा पे आपको काम करना है. विक्रम, आपके दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपके माइक से बहुत नॉइस आ रही है सर. दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी सेम ही चीज चलेगी, कोई ऐसा वो चेंज नहीं आएगा. जैसे ऑनलाइन GDB होता है उस पे तो फिर ऑनलाइन जीडी हो रहा है, तो फिर उसमें तो आपका हाथ में कंट्रोल है ना, राइट? मैं आपको कोडिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ. सर उसमें ले सकते हैं ना दोनों एरे? हाँ, उसमें तो आप उसमें आप कोड लिख रहे हो, आप कैसे भी लिख सकते हो, आप अपना कोड कैसे मैनेज कर सकते हो, बट अगर आप कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाओगे उसमें आपको फंक्शन ऐसे डिफाइन मिलेगा, उसमें आप नहीं कर सकते, राइट? उसमें आप आर्गुमेंट नहीं लिख सकते. यस सर. ओके. यस. All right. Yeah, you guys are free to leave. Okay, so this was Aman. Yeah, Aman, let's have a discussion. Yeah, buddy. लीड कोड का ही वो सर क्वेश्चन है, पैनाग्राम वाला सर. ये पोर्टल पे, हाँ पोर्टल पे सर ये वाला कोड फाइन चल रहा है, मतलब सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, बट लीड कोड पे ये नहीं पास हो रहा है, शायद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से. कौन सा कोड नंबर, क्वेश्चन क्या है? पैनाग्राम. Anagram. Yeah. Group anagrams. No sir, panagram. Pana. P. Spelling बताना. PANA. सर एक सेकंड सर. पन्ना ये थोड़ी है. Panagram. So panagrams, grams as usual.
तो PANGRAMS PAN GRAMS pangrams. Check if sentence is pangram. Yes. ये वाला Yes. spelling. A panagram is a sentence where every letter in English alphabet appears at least once. Given a string sentence contains only lowercase integer, return true if the statement is true, otherwise false. इसमें क्या करना है आपको? सर ये कुछ कोड हम पेस्ट कर रहे थे तो सर वो काम नहीं कर रहा था, एक दो टेस्ट केसेस से पास हो रहे थे इसमें? यस सर, ये सर मैंने मेन मेथड में लिखा था, यही सेम कोड में पेस्ट कर दे रहा था। हाँ, इसमें आप क्या कर रहे हो? फॉर इन टी क्या है आपका? सर टी को वो सेंटेंस वो डॉट लेंथ कर देंगे, जैसे इसमें सेंटेंस उसमें मैंने टी लिया हुआ था। पी पैरेट पी लाइन नंबर 3। सर पी इज काउंट इफ, मतलब कि अगर मान लीजिए पी हम 0 लेकर चल रहे हैं, अगर कहीं पे भी मेरा वो कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है तो मैं p प्लस प्लस कर दे रहा था, बाहर आके देख ले रहा था कि अगर p का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब पैनाग्राम नहीं है। तो यार इसको ऐसे करना ही क्यों है? एक सेकंड, ये देखो आपके कोड में पता है। अच्छा, फिर आपको कोड की गलती बता रही है। अब देखो आप p बना रहे हो, p आप एक लाइक आएगा ऐसे फ्लैग की तरह ले लो कि आपने कुछ इनवैलिड केस हिट करा है कि नहीं करा। यस सर। तो उसके बाद आप फॉर लूप लगा रहे हो, कैरेक्टर में कैरेक्टर चेक कर रहे हो, अगर वैलिड कैरेक्टर है तो आप उसको int काउंट में डाल रहे हो, int काउंट इज इक्वल टू 0 कुछ क्या है और int अच्छा हर कैरेक्टर के लिए काउंट देख रहे हो कि उसकी काउंट 0 है या नहीं है, राइट? हर उस पर आप आइटरेट कर रहे हो। तो आप इसमें कितनी आइटरेशन कर रहे हो आपको पता है? आप इस पर आइटरेशन कर रहे हो 26 into n कर रहे हो, राइट? यस सर। हाँ, तो इससे क्या होगा? आप बार बार अननेसेसरी कर रहे हो, राइट? इसका अदर फिक्स क्या होता है? आप एक सीधा लेट्स से कि इसको s ले लेते हैं ना, ठीक है? s ले लो, int n is equals to s dot length, राइट? लेंथ से लिए आपने स्ट्रिंग बना ली, अब इसके बाद एक इंट एरे बना लो, लाइक तो इसका नाम भी हम लोग चेंज कर सकते हैं ना सर? नाम तो बदल दो ना, नाम से थोड़ी कोई दिक्कत है। आप उसके ऑर्डरिंग नहीं बदल सकते, कोई नया एट्रीब्यूट नहीं डाल सकते, ठीक है? यस। न्यू लेट्स से इंट ऑफ साइज कितना 26, व्हाई 26? बिकॉज़ 26 कैरेक्टर्स होते हैं इंग्लिश, ठीक है? इसके बाद आप कुछ ना करो, फॉर इंट i is equals to 0, i is less than n i plus plus, right? arr dot arr at let's say कि s dot character at कौन सी कैरेक्टर i माइनस लोअर केस है ना, तो a माइनस a प्लस प्लस, राइट? उसके बाद कुछ नहीं करना, इफ फॉर लेट्स से कि फॉर इंट i is equals to 0, i is less than 26, i plus plus, right? If arr at i is equals to 0, return false, else return true, right? बस इतना सा कोड है। क्या हुआ इसके अंदर मैं आपको बता दूं। इसके अंदर हमने 26 की ना फ्रीक्वेंसी आरे बना दी। फ्रीक्वेंसी आरे मतलब कि a से लेके z तक हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, 26 कैरेक्टर्स है ना अल्फाबेट में, तो मैंने उसकी नंबरिंग कर ली, राइट? आरे बना ली। अब उस आरे में मैं देख रहा हूँ कि एक बार आइटरेट करके स्ट्रिंग पे कि कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, जो कैरेक्टर आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैं ऐड करता जा रहा हूँ, राइट? तो इनिशियलाइज 0 से होती है, तो मैंने जो कैरेक्टर देखा उसको मैंने 0 से मतलब उसको इंक्रीमेंट कर लिया। उसके बाद मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि 0 से लेके 26 तक जाओ, लाइक a से लेके z तक जाओ और चेक करो कि क्या जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उस कैरेक्टर के लिए वो 0 है। अगर 0 है तो मतलब वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बस रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर ऐसा किसी भी जगह पे एग्जीक्यूट नहीं होता तो मेरा मतलब वो आंसर सही है, तो इसको ट्रू कर दो। आप ये लो, ये कोड एक बार ना इसको पेस्ट करो, राइट? मैंने अभी आईडी लॉगिन नहीं करी हुई तो मैं चेक नहीं करता। सर लाइन नंबर 7 लाइन नंबर 6 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। लाइन नंबर प्लस लाइन नंबर 6 वो प्लस लाइन नंबर 6 प्लस प्लस इज बेसिकली कि इस इंडेक्स पे एरे के इस इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1। ओके सर -a कर रहे हैं तो अगर वो एग्जैक्टली उस हमको वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा है ना? हाँ, इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा है और उससे इंटीजर से क्या हो रहा है, मेरे को इंडेक्स मिल जा रहा है, राइट? अगर a में से a माइनस करोगे तो वही ASCII वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट, राइट? मैंने आपको बताया था a में से a माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 0, तो a 0 पे हो गया, राइट? आप एक बार ये कोड रन करके देखो, बताओ चल रहा है कि नहीं चल रहा। चला?
देख रहे सर एक सेकंड। देखो Yes, sir, this works. वर्क्स ना। हाँ तो इट्स दिस इज द एग्जैक्ट लाइक फ्रीक्वेंसी एरे वाला कॉन्सेप्ट, राइट? प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पूछा था कैसे हो सकता है, फ्रीक्वेंसी एरे बना लो, उसमें आप चेक करते रहो, राइट? बट इसमें फिर मैनेजमेंट करोगे, कैसे करोगे, राइट? तो हर क्वेश्चन Sir, को करने के ना सेवरल तरीके से हो सकते हैं, yes, आपको देखना है sir. कि आपको कौन सा मैनेज करना है। हाँ बोलो। Sir, will it be counted like in the previous question, I created an array with frequency array, right? In which we Yes. copied all the elements from the heights. Sir, will it be counted? Will this array be counted in the auxiliary space? Yes, yes, because we are like see, in this space will be like O of 1. Why O of 1? Or you can say O of 26. Yeah. 26 is a constant variable, so it's So again O of O n, 1. right? No, it will be O of 1, right? Time complexity O of n होगी, क्यों? आप पूरी string पे iterate करो, string की length हमें नहीं पता, पर जो आप Yes, sir, frequency because, array बना रहे हो वो yes, sir, सिर्फ yes, sir, yes. fixed size की है, तो वो O of 1 में ही चलेगा, ठीक है? Because it will be independent of the length of the string. Yes, it will be लाइन नंबर independent. 7 में एरर बोल रहा है सर। कौन सा? लाइन 7 में एरर बोल रहा है। लाइन 7 में एरर बोल रहा है? लाइन 7 तो यार ब्रैकेट है। सर मुझे वो समझ में नहीं आया, एरे प्लस प्लस क्या करता है वो बेसिकली? एरे प्लस प्लस उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट की वैल्यू है, उस इंडेक्स की जो वैल्यू है ना, उसको इंक्रीमेंट कर देता है। जैसे कि अगर इंडेक्स 0 पे वैल्यू 1 पड़ी हुई तो प्लस प्लस उस जगह पे 1 को इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा, 2 को इंक्रीमेंट करके 3 कर देगा, राइट? उस वैल्यू को, उस पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है। ओके सर, इट्स अ पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट? एज वी डू ए लाइक आई प्लस प्लस करते हैं ना फॉर लूप में, तो उससे क्या होता है, आई का इंडेक्स बढ़ जाता है, पर इस बार हम क्या करें, उस पोजीशन पे जाके पॉइंट करके उसको इंक्रीमेंट करें, तो उस पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा वो इंक्रीमेंट। ओके, ठीक है? Yeah guys, so I guess that's pretty much it from my side for today's class, right? सर We मैंने have एक लिंक दिया सर, उसमें सर टाइम लिमिट मेरा एग्जिट हो रहा है सर उस क्वेश्चन का। यार अब अगली क्लास में देख लें। सर टुमारो आई गेस दे लो, टुमारो सैटरडे वीकेंड है, चलो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे यार। ओके सर, खिंच जाएगी, 2 घंटे खिंच जाएगी क्लास, पता है। ओके सर। So yeah guys, that's pretty much it from my side for the class today. Okay, so I guess we will be like having 2 more classes. So yeah, we will be having a similar like kind of pattern from now on कि 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद half an hour for you guys to basically clear all your doubts, right? Similar pattern. So just try and practice functional programming. Anything you have an issue with, just let's discuss in the next classes. Okay? Okay sir. Okay sir, thank you sir. All right. Yeah. Thank you sir. All right. अब कोई क्वेश्चन बाकी तो नहीं है ना? आई गेस सारे क्वेश्चंस हो गए ना असाइनमेंट्स के? यस असाइनमेंट तो सही है सर। हाँ, लार्जेस्ट ही बाकी था ना? हाँ सर, एक सर वो लिंक लिस्ट वाला कुछ था, लिंक लिस्ट तो लिंक लिस्ट कर ही नहीं सकते ना, लिंक लिस्ट पढ़ी थोड़ी आपने, मॉड्यूल 2 का डेटा स्ट्रक्चर है वो लिंक लिस्ट, एल्गोरिथम भी नहीं है। It works from if you do it by array. वो इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि आप आउटपुट पे काम कर रहे हो, लाइक अगर आप उसके कॉन्सेप्ट पे जाओगे ना, तो वो लिंक लिस्ट का आपने कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करा। यस सर, ठीक है? Yeah, so for practice, like you can solve it using array, right? It's pretty easy with arrays. For a topic is hard with linked list. Okay. yes sir. All right, guys. So we'll see you in the next class. All right. Thank you sir.